And thank you for assisting me because I do many things, but speaking Urdu is not one. My apologies. Okay. So what I'll do, Kathleen कह रही है thank you आने के लिए और मैं request करूँगी हमारी team member अबीरा एजाज से जो कि simultaneous उर्दू interpretation करेंगी Kathleen की presentation की. तो उन्होंने ये कहा है, ये कैथलीन है, उन्होंने ये कहा है कि ये काफ़ी कुछ कर सकती हैं, लेकिन उर्दू एक वो चीज़ है जो ये नहीं बोल सकती, तो मैं ट्रांसलेट करूँगी as we go. Thank you, Abira. Okay, slide, first one. So you talked about when to vote, how to vote, who can vote, but now we're going to have a conversation about why you should vote. ये कह रही हैं हमने बात की कि हमें क्यों वोट करना चाहिए और हम कौन वोट कर सकता है कौन नहीं कर सकता, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमें क्यों करना चाहिए, ये अब मेन मौजू पे इस पे बात. So someone please tell me, why do you think it's important to vote? You can call out. तो ये पूछ रही हैं कि आप में से कोई बताए कि क्यों इतना जरूरी है वोट करना. कोई भी हाथ ऊपर करके बता सकता है. कोई भी नहीं जी, कुछ तो बोले. Thanks to God, I'm an American. I do have a right to vote whatever I want, whenever I want, where I want. This is my right. Excellent. जी आंटी अमीना आप कुछ कहना चाह रही थी. वोट कौम की अमानत है. Vote is the amanat of the qawm. They owe it to the country. It's amanat is like something you have to give back. A duty, yes, absolutely. Yes. It's a duty of a resident. Excellent. Others? Yes. ताकि कोई बंदा हमारे काम कर सके. So that somebody could do the things for us, for our community. Excellent. Yes. ताकि मैं अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब कर सकूं. So that he can pick a representative that would represent him. Excellent. So I hear choosing your own representative because it is your right, because it is a responsibility and a duty, because it helps your community. Any others? Why you vote? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? Thank you. One of the biggest advantage that you will have is that you will be making your own decision. No one else will be making your decisions on your behalf. Excellent. Awesome. You wanted to translate? Of course, तो ये कह रहे हैं कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकेंगे, आपका कोई इसमें से होगा इस डिसीजन में. So I love these answers. This is one of the most important things that you can do because democracy. How many of us here cook? यहाँ पे कौन कौन कुक करता है? खाना बनाता है कौन कौन? And how many of us love to eat? Like All me. of us. और किस किस को खाना पसंद है? So democracy is the meal that we prepare together as a community for all of our families to sit at the table and enjoy. So democracy जो कि है जमहूरियत, हमने अभी ट्रांसलेट करने में हेल्प की, तो उससे ये है कि सारे हम एक ही टेबल पे बैठ के एक ही किस्म का खाना खा सकें. That's why जमहूरियत जरूरी है. And I'm going to quote our own Dr. Sarah Saeed. By voting, you commit an act of love for your own community and family. तो उन्होंने कहा है कि वोट करके आप अपना प्यार दिखाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, एक साथ रहने के लिए. जैसे कि डॉक्टर सारा सईद ने कहा. जैसे कि डॉक्टर सारा सईद ने कहा. So let's talk about how we get people out to vote. तो अब हम इस पे बात करेंगे कि हम किस तरह अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को वोट करने के लिए भेजें. So I'm going to talk about the history. Before we do anything, we should know what people before us have had to go through, yes? We should know the history of the land where we are. तो अभी आपको हिस्ट्री बताएंगी कि पहले काफी साल पहले जिस हम मुल्क में हैं, जिस जमीन पे हम हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही है और पहले क्या क्या हो चुका है. 1776, after half a million people have died in the Civil War, we begin voting in America. 1776 में जब आधे मिलियन लोग जिनकी डेथ हो गई, उसके बाद शुरू हुई है वोटिंग अमेरिका में. So voting began after a war with Mother England.
तो वोटिंग शुरू हुई है एक वॉर के बाद जो कि इंग्लैंड के साथ थी. 1920, women get the right to vote. 1776 के बाद 1920 में औरतों को हक मिला है वोट करने का. And for those women to gain the right to vote, they protested. They took action. Many were beaten, some were cast from their families, and some were put in an asylum because they had to be crazy to think they should vote. तो 1920 में जब औरतों को हक मिला वोट करने का, उस टाइम पे काफी औरतों को या तो घर से निकाल दिया गया या तो उन्हें मेंटल असाइलम्स में डाल दिया गया क्योंकि उन्हें लगा कि ये पागल है कि ये अपना हक मांग रही हैं वोट करने का. 1924, the Native Americans get an act passed in the government, and they who had the land, who were here first in 1924, they get the right to vote. और 1924 में जो नेटिव अमेरिकन्स थे जो कि अमेरिका में सबसे पहले रहते थे, उनको 1924 में राइट मिला है वोट करने का. 1943, Chinese Americans that came to America from China, 1943, they are now permitted to vote. 1943 में चाइनीज अमेरिकन जो चीन से हैं उनको वोट मिला, उनको हक मिला है वोट करने का 1943 में. Let me rewind. The Native Americans went through genocide. They almost were completely annihilated in this country before they could vote. So नेटिव अमेरिकन्स जो थे उन सब को, उनकी पूरी नस्ल को मार देने की कोशिश की गई इस मुल्क में, इस जमीन पे, और उसके बाद इतने सालों के बाद उनको हक मिला वोट करने का, जो बच गए थे उनको. The Chinese immigrants were discriminated against, lost their homes, businesses burned before they got their right to vote. और जो चाइनीज इमिग्रेंट्स थे उन सबको उनके बिजनेसेस खत्म कर दिए गए, उनके घर जला दिए गए, उनके सारे हुकूक उनसे छीन लिए गए, उसके बाद उनको वोट करने का हक मिला. In 1961, the people who lived in Washington, D.C., the nation's capital, finally got the right to vote, but only for president and vice president. They do not have other representatives in the Congress. तो 1961 में वाशिंगटन डीसी जो कि हमारे स्टेट का कैपिटल है, उसके रेजिडेंट्स को वोट करने का हक मिला, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंसी के लिए और वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए. सेनेटर्स और अदर रिप्रेजेंटेटिव्स का उनको हक नहीं मिला वोट करने का अभी तक. So something very interesting. Remember 1776, there was a war because the man who came here to America said he will not pay taxes without being represented in Congress. And that is why they had the war. But in 1961, we said some residents in Washington, D.C. can vote, but they still are not represented, but must pay taxes. Okay, you're gonna have to cut that up first. Okay. So the first part is in 1776, we fought a war so that we would not be paying taxes without being represented. Yes. Okay, so सबसे पहले 1776 में जो वॉर हुई थी उसका ये था जो कि इंसान जो अमेरिका में आया, इस जमीन पे आया, उन्होंने ये कहा था कि उनको वो टैक्सेस नहीं पे करेंगे जब तक उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती. But in Washington, 1961, Washington, D.C., and to this day, they are voting only for president and vice president, so they are being taxed without representatives in Congress. तो अब ये कह रही हैं कि 1961 में जो कि वाशिंगटन डीसी के रेजिडेंट्स को जो हक मिला था वोट करने का प्रेसिडेंसी और वाइस प्रेसिडेंसी के लिए, जो उनको आज तक हक नहीं है रिप्रेजेंटेशन के बगैर, वो फिर भी टैक्सेस पे कर रहे हैं आज तक. 1965, Voting Rights Act means that people that look like me, the Black or African American or African in America, can finally vote. So in 1965 में people of color, African Americans, Black people, उनको वोट करने का हक मिला.
I do. Oh, Right, so so don't, there's no thank you. back and forth. Okay, wonderful. Yeah. Okay, so 1971 is when younger people can vote, because it used to be 21 years or older. In 1971, then 18 and 19 and 20-year-olds can now vote. So 1971 में जाके उससे पहले था कि 21 और अब आप 21 साल से ऊपर जब आपकी उम्र है तब आप वोट कर सकते हैं. 1971 में 18 साल उम्र बनाई गई वोट करने की. In 1975, now for the first time, we expand language access and services at voting sites. 1975 के बाद लैंग्वेज सर्विसेज लैंग्वेज एक्सेस के आप डिफरेंट ज़बानों में बात करने वाले लोगों को वोटिंग सर्विसेज दी गई हैं 1975 के बाद. And 1982 is when we finally expand services for access for people with disabilities so they can vote. 1982 में तब वो सर्विसेज आई हैं, कोई माजूरी है किसी को, उनके लिए अब सर्विसेज आई हैं 1982 में कि वो भी वोट कर सकें. So here is our mission, our assignment. तो ये हमारा मिशन है, हमारा असाइनमेंट जो हम करने आज यहाँ पे आए हैं. We stop the drop between voter registration and voter activation. Could you help me with that? Sorry, say again. I was just recording. So our mission is to stop the dropping between people registered to vote and people actually voting. Okay. So अब हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि हमने उस नंबर्स को ड्रॉप जो हुए हुए हैं उनको सही करना है. हमारे पास हाईएस्ट नंबर लाइक 90% लोग रजिस्टर टू वोट हैं, लेकिन वोट डालने सिर्फ 23% जाते हैं. तो हमने उस नंबर का जो गैप है उसको खत्म करना है as soon as possible. So some scary numbers. In New York City, there are 8.8 million residents. So कुछ बड़े नंबर ये बताएंगी जो कि है न्यूयॉर्क सिटी में 8.8 मिलियन रेजिडेंट्स हैं जो कि रहते हैं. 5.3 million people in New York City are registered to vote. उसमें से 5.3 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हैं वोट करने के लिए. But last November, a little over 1 million voted. लास्ट नवंबर उस 5 मिलियन समथिंग में से a little over थोड़ा सा 1 मिलियन ज्यादा लोगों ने वोट किया. That's terrible. जो कि बहुत ही खराब है. Wow. Let's talk about your vote's power. अब आपके वोट की ताकत के बारे में बात करते हैं. In 2019, in a race for Queens District Attorney, 2019 में रेस थी जो कि क्वींस की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की. the candidate won with only 600 votes. जो कैंडिडेट था, जो नुमाइंदा था, वो जीता है 60 वोट से. 60 वोट से वो नुमाइंदा जो जीते हैं वो 60 वोट से जीते. How many of you have ever been to a wedding? आप लोगों में से कितने लोग किसी शादी पे जा चुके हैं पहले? अपनी शादी पे सबसे पहले गए. So there were more than 60 people often, yes? Yes. तो शादी पे ही 60 लोगों से तो ज्यादा थे. होते हैं. So one wedding and that person would have lost. तो कहिए एक शादी होती और वो जो नुमाइंदे थे वो हार जाते. So the community, every vote has power. So हर एक वोट का अपना पावर है कम्युनिटी में. That same November, in the general election, that candidate won by 100,000 votes. और उसी नवंबर में you go back please. और उसी नवंबर में जनरल इलेक्शन में 100,000 वोट्स से वो नुमाइंदा जीत गए. So every election is critical. तो हर इलेक्शन बहुत ही जरूरी है. Okay. This year, November 7, Election Day, we have a lot of things happening on the ballot. A lot of positions, we're going to go through them in a moment. तो इस नवंबर 7 को काफी डिफरेंट पोजीशंस हैं जो कि हो रही हैं और काफी कुछ हो रहा है बैलेट में. The ballot is not the same in every borough.
और हर बोरो का बैलेट डिफरेंट है, मुख्तलिफ है एक दूसरे से. So in Brooklyn, you're voting for Justice of the Supreme Court, तो ब्रुकलिन में आप जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए वोट कर रहे हैं, Judge of the Civil Court, जज ऑफ द सिविल कोर्ट के लिए वोट कर रहे हैं, Member of the City Council, मेंबर ऑफ द सिटी काउंसिल के लिए वोट कर रहे हैं, Surrogate Court Judge, सरोगेट कोर्ट के जज के लिए वोट कर रहे हैं, and 2 proposals to amend the state constitution. और 2 प्रपोजल्स होंगे स्टेट के कानून में तरमीम करेंगे. जो कि स्टेट के कानून में तरमीम करेंगे. ये मेरे लिए भी नए वर्ड्स हैं. Okay. So what do these people do? You wonder, yes? तो ये लोग करते क्या हैं, उनकी जॉब क्या है? The New York City Council largely manages the New York City budget, and they vote on the budget. And that is one of their main jobs. They also monitor the city agencies that serve you every day. तो न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल जो है उनकी मेन जॉब ये है, उनका मेन काम ये है कि वो न्यूयॉर्क सिटी का बजट मैनेज करते हैं. बजट के बारे में हमने बात की थी. तो न्यूयॉर्क सिटी का बजट वो मैनेज करते हैं, और ऑल्सो जो हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करती हैं और वो हमारे साथ काम करते हैं, अगेन बजट के साथ. They also pass laws that affect us every day, and and they decide how the land in the city of New York is used. तो वो इस चीज में भी होता है उनका से कि कोई भी नए कानून लॉज जो हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं, और न्यूयॉर्क सिटी की जो जमीन है वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उस जमीन के साथ क्या कर सकते हैं. For example, they can decide if there will be development on the land in your community or parks. तो इसका उससे ये मुराद थी कि ये डिसाइड कर सकते हैं ये लोग कि जो जमीन है आपकी कम्युनिटी में, आपके नेबरहुड्स में, उसमें पार्क बनेगा या एक बिल्डिंग बनेगी. How many people here have a landlord? They rent an apartment. यहाँ पे किस किस का एक लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है जो रेंट करते हैं घर? कोई रेंट नहीं करता? आप में से कितने लोग किराए पे रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं? So in November, you will vote for the judge that decides the problems between landlords and tenants. तो अब ये कह रहे हैं कि नवंबर में आप उस जज के लिए वोट करेंगे जो डिसाइड करेगा कि आपके बीच में और आपके मकान मालिक के बीच में जो भी मसले मसाइल अगर हो तो वो कैसे मैनेज होंगे. And this is judge of the civil court. They also decide personal injury cases and business disputes. So if I went outside and I fell on the sidewalk, that judge is going to say if it was the landlord's fault or my fault. तो ये लोग also personal injury जो कि है, अगर आपको कहीं चोट लगी है, अगर आप बाहर कहीं गिर गए हैं तो उसके भी, और business dispute अगर आपके businesses में कोई मसला चल रहा है तो वो भी ये जज डिसाइड करेंगे कि उसमें किसकी गलती है, कौन पे करेगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. You'll also vote for justice of the Supreme Court that decides felony and civil cases and criminal prosecution of felony cases. So आप जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता है, यानी सबसे बड़ा नुमाइंदा जो कोर्ट में बैठा हुआ होता है, उसके लिए भी आप वोट करेंगे, और वो फेलनी के केसेस को, सिविल केसेस को उनको हैंडल करता है. क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस ऑफ फेलनीज, यानी अगर क्रिमिनल किस्म के कोई केसेस हैं, प्रोसिक्यूशंस होती हैं, तो उनके केसेस को भी वो जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डील करता है. And if your daughter or son made a mistake and they married someone you never met, this is the judge that will decide a divorce. और अगर आपका बेटा बेटी किसी ऐसे इंसान से शादी करते हैं जो आप कभी उनसे मिले नहीं, आपने अप्रूव नहीं किया, तो अगर उनके साथ भी कोई डिवोर्स होता है, यही जज डिसाइड करेंगे कि उनके साथ क्या होता है. Surrogate court judge. How that translates? This judge is very important. They serve for more than a generation, 14 years. सरोगेट कोर्ट के जो जज हैं वो 14 साल सर्व करते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है कि इतना टाइम ज्यादा वो होंगे. They decide adoption.
they decide guardianship, and guardianship means, this is a long one, forgive me. If your elderly mother or father is no longer able to take care of themselves and you want to protect them, you might want a guardianship, meaning the son or daughter is now the guardian of the mother or father. This judge decides that. तो ये सरोगेट कोर्ट के जो जज हैं अडॉप्शंस वो अगर आप बच्चे अडॉप्ट करते हैं उसके सारे लॉज और उसके रेगुलेशंस यही डिसाइड करते हैं. उसके अलावा गार्डियनशिप का ये मतलब है कि अगर आपके माँ बाप बहुत ही बूढ़े हैं और वो एज हैं तो उसमें ये है कि उनको जब गार्डियंस की जरूरत है, जैसे उनके बच्चे फिर उनके गार्डियंस होंगे, तो उसके भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सारे ये सरोगेट कोर्ट के जज डिसाइड करेंगे. The word for guardianship is sarparast. सरपरस्त. One of the most important things that this judge does, when a person passes away, if they do not have a will in place, or if the family is arguing about the will, this judge decides what happens to everything you worked for, your house, your money, everything. और अगर किसी कोई गुजर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है और उनकी विल वसीयत तैयार नहीं होती जो उन्होंने डिसाइड किया हो कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये जज डिसाइड करते हैं कि सारी जिंदगी उन्होंने जिस चीज के लिए काम किया है उनके सारे पैसे, मिल्कियत जो भी कहाँ जाएगी. So this judge, if you don't have a will, is going to make decisions about your wealth in your family and community for 14 years. तो यही जज आपके पैसों पे कि आपकी जो भी आपकी सारी जिंदगी का काम आपकी फैमिली को जो अफेक्ट करता है उस सब के डिसीजंस ये जज बनाएगा 14 साल के लिए. आपकी जो भी जायदाद है, जायदाद आपकी जो भी है. Okay, and we talked about the ballot proposals. These do not have direct impact right now on New York City, but if you have family outside of New York City, Westchester, Albany, Buffalo, anywhere in the state, these are very important. जो बैलेट के प्रपोजल्स हैं वो इस टाइम पे न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले लोगों को अफेक्ट नहीं करते, उनका असर नहीं होता न्यूयॉर्क सिटी के रेजिडेंट्स को. लेकिन अगर न्यूयॉर्क सिटी के बाहर आपकी कोई भी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी रहता है तो ये डायरेक्टली उनको अफेक्ट करते हैं. So one is about how much money a small school can borrow in order to do construction and make improvements. तो पहली चीज है कि कोई छोटा स्कूल कितने पैसे बोरो कर सकता है, कितने पैसे ले सकता है, लोन हो सकती है जिससे वो थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर सके या स्कूल को फिक्स अप कर सकें. The other will be in place only for 10 years and determines how much money a county, town, or village can borrow for improvements or construction around sewage. दूसरी चीज ये है कि एक छोटी काउंटी या छोटा एक शहर कितने पैसे बोरो कर सकता है, लोन कर सकता है. सेवरेज का सिस्टम, ये जो नाले और वो होता है, नालों और गटरों का सिस्टम, सुवेज सिस्टम के लिए कितने पैसे ले सकते हैं और ये 10 साल तक होता है. And these proposals affect everybody in the state. और ये प्रपोजल्स पूरे न्यूयॉर्क स्टेट में सबको अफेक्ट करते हैं. And when you make your decision, you will vote yes or no. और जब आप अपना डिसीजन, अपना एक मकाम कायम कर लेंगे तो आप सिर्फ हाँ या ना में वोट कर सकते हैं. So let's review the important dates. तो अब रिव्यू करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स. तो अक्टूबर 23 पे आप अप्लाई कर सकते हैं वोट के लिए मेल के जरिए और एड्रेस चेंज करने के लिए. अक्टूबर 28 आखिरी दिन है रजिस्टर करने का वोट के लिए, वोटिंग के लिए. अक्टूबर 28 से नवंबर 5 तक अर्ली वोटिंग शुरू हो जाएगी. नवंबर 7 इलेक्शन डे है और नवंबर 7 आपकी रिटर्न मेल that would be like Has to be postmarked. okay, so it has to be sent out. Postmarked by that वापस भेजने का टाइम, वापस भेजने का टाइम आपका होगा नवंबर 7 को भी, जो कि इलेक्शन डे भी है. So very important. Now in New York State, anyone who is eligible to vote can request to vote by mail. Anybody. तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये हुआ है कि न्यूयॉर्क पूरे स्टेट में कोई भी जो एलिजिबल है, जो कि वोट कर सकते हैं,
वो मेल के थ्रू, डाक के थ्रू वोट करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. And on October 28th is the one day you can register to vote for the first time and go vote on the same day, like McDonald's. Okay, October 28 वो एक दिन है जिसपे आप जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं और उसी दिन आप वोट भी कर सकते हैं. तो उसी दिन प्लीज. No crowd to face. Okay, very important now. We have to take some action. We want everyone here who is eligible to vote to make a promise to vote. अब कॉल टू एक्शन है कि अब आपने करना है और करके दिखाना है. तो यहाँ पे जो भी सारे आप लोग हैं उसमें से कोई भी जो एलिजिबल है वोट करने के लिए वो हमसे ये वादा करें कि आप वोट करेंगे. And when you leave here today, yes! Wow. Clap for everyone. When you leave here today, we can ask you to fill in a commitment to make the promise, a contract between us and the community that you're going to vote. Then, I want you to find 5 people that you know that can vote, and get them to make a promise to. तो उन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ से जाने से पहले हम आपसे एक कमिटमेंट फॉर्म फिल करवाएंगे कि उसमें आप कमिटमेंट और वादा करते हैं कि हम जरूर वोट करेंगे और फिर आप पे ये जिम्मेदारी रखते हैं कि आप 5 और लोग ढूंढें जो कि एलिजिबल हैं वोट करने के लिए और उनसे भी वोट करवाएं. So, you see 5? You say hi! Promise to vote? Yes, Yes. definitely. See, it's easy. तो जब आप 5 लोगों को देखें आपने उसी टाइम उन्हें पकड़ना है कि वोट करें. And you can also assist us by signing up. You can use this code here, or you can contact Arun or any one of our team, anybody with these shirts, and we can assist you to sign up to help us put up posters in the community in Urdu that tell people where to go and vote. और उन्होंने अब ये कहा है कि या तो आप ये कोड स्कैन करें या तो हम सब में से या इनके किसी भी स्टाफ में से उनसे पूछें कि आप किस तरह मदद कर सकते हैं कि हम पोस्टर्स लगा सकें डिफरेंट जगहों पे जो कि उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू ज़बान में इंफॉर्मेशन बताए कि आप कहाँ जाके वोट कर सकते हैं जहां आपको तर्जुमानी सर्विसेज मिलेंगी. Go ahead, I think that was the last one for me. Okay. So we're going to have these days of action, and we will send information through APNA so that you can sign up and help where you can. Or if your teenagers are not doing anything, give them to us. तो ये इनके 3 days of action हैं. पहला है कम्युनिटी कैनवस जो कि इन पर्सन होगा नवंबर 3 को, फिर है फोन पे होगा जो नवंबर 6 को, और फिर है सोशल मीडिया पे होगा नवंबर 7 को. और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके छोटे कोई बच्चे हैं टीनेजर्स उनको प्लीज हमें दे दें, हम उन्हें काम पे लगाएं. Okay, I will take any questions, but first I want to show you my gratitude. Thank you for being so welcoming and so patient. Thank you for craning your eyes. This is as tall as I get, so you may not see me, but you can hear me. तो उन्होंने सबसे पहले थैंक यू बोल. Don't forget to like, comment and subscribe.